Question number 1. Ridges which are present in the ventricles are columni carnii, papillary muscles, chordae tennae, musculi pectinati. Correct answer is option A. Columni carnii are the muscular ridges present on the inner layer of ventricles. Question number 2. QRS complex in a standard ECG represents depolarization of ventricle, repolarization of ventricle, repolarization of auricle, depolarization of auricle. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्यू आर एस कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 3. Abnormal rise in erythrocyte count is called as leukopenia, polycythemia, anemia, or pneumonia. Correct answer is option B. Polycythemia is a condition in which erythrocyte number or red blood cells number becomes abnormally increased. Question number 4. Kidney shaped nucleus occurs in neutrophil, eosinophil, monocyte, lymphocyte. Correct answer is option C. Kidney shaped nucleus is present in monocytes. Question number 5. Amount of blood received by brain every minute is 2500 ml, 1000 ml, 750 ml, 450 ml. Correct answer is option C. 750 ml of blood is received by brain in each minute. Question number 6. Person with AB blood group cannot receive universally donate, universally receive only from O. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। एबीओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल जो है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट होते हैं, दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी अदर ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7. Blood vessel of a diaphragm is called coronary, cardiac, pharyngeal, or pulmonary. Correct answer is option C. Pharyngeal artery is a blood vessel that supply blood to the diaphragm. Question number 8. In ECG, what does T wave represents? Diastole of auricle, diastole of ventricle, systole of ventricle, diastole of auricle, और repolarization of ventricle. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। टी वेव रिप्रेजेंट करती है ऑरिकल्स की डायस्टोल कंडीशन को या फिर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। क्वेश्चन नंबर 9. In uremia, there is increasing urine output, increased urea in the blood, increased serum cholesterol, increased blood sugar. Correct answer is option B. In uremia, there is increased level of urea in the blood. Question number 10. Chances of erythroblastosis fetalis occurring during second pregnancy when the baby is Rh positive and mother is Rh negative. Rh positive baby and mother is also Rh positive. Rh negative baby and mother is also Rh positive. Option D है Rh negative baby and mother is also Rh negative. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चा बेबी जो है वो RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव हो तो रिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. Normal glucose level of blood is 10 milligram per liter, 1 milligram per liter, 100 milligram per liter, 0.1 milligram per liter. Correct answer is option B. 1 milligram per liter is the normal glucose level of blood. Question number 12. Valves which allow the blood from ventricle into arteries and not in opposite direction are known as aortic valve and mitral valve, AV valves and semilunar valves, bicuspid valves and tricuspid valves.
semilunar valves. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिमिल्यूनर वाल्व्स जो है वो वेंट्रिकल से ब्लड को अलाउ करते हैं आर्टरीज में, एंड दे आल्सो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 13, हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, कार्डियक मसल, पेसमेकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पेसमेकर साइनोएट्रियल नोड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हार्ट के राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है, और ये पेसमेकर सिग्नल जनरेट करता है फॉर हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर 14, what is true about vein? All veins carry deoxygenated blood. All veins carry oxygenated blood. They carry blood from organs towards heart. They carry blood from heart towards organs. तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, veins carry blood from organs towards the heart. क्वेश्चन नंबर 15, द सीक्वेंस ऑफ कार्डियक साइकिल इज़। तो कार्डियक साइकिल की जो करेक्ट सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है, और उसके बाद ज्वाइंट डायास्टोल होता है। तो ये थ्री सीक्वेंसेस हैं कार्डियक साइकिल की। क्वेश्चन नंबर 16, wall of heart is covered externally by epicardium, epithelium, endothelium, Gleason capsule। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, wall of heart is externally covered by epicardium। Question number 17, valves that are present between the right auricle and right ventricle is mitral valve, tricuspid valve, bicuspid valve, semilunar valve। Correct answer is option B, tricuspid valve is present between right auricle and right ventricle। Question number 18, which one of the following protein is involved in coagulation of blood? Globulin, fibrinogen, albumin, serum amylase। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजिन जो है वो एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, और ये ब्लड कोगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 19, allergic responses are regulated by eosinophils, neutrophils, basophils, monocytes। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, allergic responses although regulated by basophil cells also, but mainly eosinophils regulate allergic responses। Question number 20, blood vessels carrying least carbon dioxide is pulmonary vein, pulmonary artery, vena cava, or hepatic vein। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ आती है। तो इसके अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है, जबकि लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, lymph is colorless because white blood cells are absent, white blood cells are present, hemoglobin is absent, RBC are absent। correct answer है ऑप्शन डी, lymph is colorless because it has no red blood cells। question number 22, largest corpuscles of mammalian body are lymphocytes, basophils, erythrocytes, monocytes। Correct answer is option D, monocytes are the largest corpuscles of mammalian blood। Question number 23, angina pectoris is a major symptom of myocardial infarction, cyanosis, high blood pressure, low blood pressure। Correct answer is option A, angina pectoris is a major symptoms of coronary artery disease such as myocardial infarction। Question number 24, love sound produced by heart is caused by ventricular systole, ventricular diastole, atrial diastole, atrial systole। Correct answer is option A, love sound is produced by heart
दैट इज़ काज्ड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में चूँकि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं तो उनके क्लोज होने पर लब साउंड प्रोड्यूस होती है। Question number 25. Which of the following is not a lymphoid organ? Spleen, thymus, kidney, lymph nodes. तो गिवन ऑप्शन में जो किडनी है ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है, जबकि बाकी तीनों लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। Question number 26. The difference between systolic and diastolic pressure is blood pressure, pulse pressure, cardiac output, pulse. Correct answer is option B. The difference between systolic and diastolic pressure is known as pulse pressure. Question number 27. The cation or mineral that is necessary for coagulation of blood is sodium, calcium, potassium, chlorine. Correct answer is option B. In presence of calcium ion, प्रोथ्रम्बिनेज एंजाइम जो है वो प्रोथ्रम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव थ्रम्बिन में। क्वेश्चन नंबर 28. Volume of blood that enters aorta with each ventricular systole is known as vital capacity, cardiac cycle, stroke volume, cardiac output. Correct answer is option C. Stroke volume is the volume that is volume of blood that is pumped by each ventricular systole to the aorta. Question number 29. Which one prevents the blood clotting in blood vessels? Heparin, fibrinogen, albumin, globulin. Correct answer is option A. Heparin is anticoagulant and it prevents blood clotting in blood vessel. Heparin protein is synthesized by liver. Question number 30. The most common type of hemophilia is due to congenital absence of factor 2, factor 5, factor 8, or factor 11. Correct answer is option C. Most common type of hemophilia, that is hemophilia A, and it is a congenital disorder due to absence of blood clotting factor 8.